Hello everyone once again. Okay, so now I am just going to explain our last lesson, that is lesson number 10.1. Okay, the sheep of the desert. Okay, so yes, hello everyone first of all. So yes, what is the sheep of the desert? So you will say, ma'am, camel is the sheep of the desert, because we have learned the same lesson, or we can say that we have learned about the camel in our previous classes also. So here we are also just going to learn more about a camel. Okay, you know that what is a desert. Desert is an area which is covered with सैंड, ठीक है ना, ये तो आपको पता है ना, जहाँ बहुत सारी रेत होती है, दैट इज कॉल्ड डेजर्ट ओनली. ओके, सो हियर द कॉन्वर्सेशन हैज बीन गिवन. कॉन्वर्सेशन का मतलब होता है बातचीत. ओके, सो हियर लायन एंड कैमल आर कम्युनिकेटिंग विथ ईच अदर. दे आर कन्वर्ट लाइक बातचीत कर रहे दोनों के दोनों. सो लेट अस लर्न अबाउट द कॉन्वर्सेशन ऑफ देम. ओके, हियर लायन रॉरिंग, रॉर करना, यू नो दैट ना, लायन मेक्स रॉरिंग ओनली. लायन रॉर करता है, जोर से चिल्लाता है. हु आर यू, कौन हो आप? Camel looking down at the lion, because you know that camel is a tall animal like me. I am not an animal, मैं कोई animal नहीं हूँ, but yes, we can. I would like, I was about to say that yes, camel is in height, camel की height होती है, whereas lion is in short comparatively, or we can say that small comparatively. Okay, so yes, looking down at the lion, because lion was standing there, so he says, I am the sheep of the desert. Who are you? मैं शीप ऑफ द डेजर्ट हूँ, ठीक है, मैं डेजर्ट का शीप हूँ, जहाज हूँ. हु आर यू, आप कौन हो? लायन सेज, डोंट यू नो मी, आई एम द किंग ऑफ द फॉरेस्ट. Because you know that the lion is the king of the forest, because lion is the most powerful animals of all, है ना. So that is why he is saying that I am the king of the forest. मैं तो जंगल का राजा हूँ. Camel says, are you? Oh see, अच्छा आप राजा हो, ठीक है. Lion then frowning, you call yourself the sheep of the desert? How can you be a sheep? You are an animal. Frowning means here little bit angry. Okay, so lion got little bit angry that you are calling yourself sheep of the desert. Okay, आप अपने आप को sheep of the desert बोल सकते. How can you be a ship? You are an animal. आप एक जहाज कैसे हो सकते हो? Because you are an animal only. Okay, so now let us see, let us move towards the conversation. Camel smiling. So now after listening to the lion's confusion or lion's question, he just smiled and said, so I am, but people call me the sheep of the desert. I can walk across the desert even on a hot afternoon. The sand burns, but it doesn't bother me. Okay, so now camel replied कि why the people are calling him sheep of the desert. तो थोड़ा सा smile करता है, बोलता है, so I am, yes, you are absolutely correct that I am an animal only. मैं एक animal हूँ, but people call me the sheep of the desert. Okay, they have given me the name as the sheep of the desert. And why they have given me the name? Because I am having some of the qualities, like I can walk across the desert even on a hot afternoon. You know that because people are using camel only for moving into that desert में move करने के, because no vehicles will be there. You know that some of the vehicles are there who can run on the desert sand, जो sand के ऊपर चल सके, ऐसे बहुत कम vehicles are there. But you know that most of the time people are using camels only if they want to go through the desert. Okay, so yes, here and why they are using camel, why they are taking the help of camel? Because camel can walk on desert's land even on a hot afternoon. अगर जितनी भी गर्मी हो तो भी the camel can walk on the desert's land. That is why only the people are using it. Even the sand burns, because you know that sand is a very गर्मी में बहुत गर्म हो जाती है और ठंडी में बहुत ठंडी भी हो जाती है. Okay, so yes, it is having the unique features. So yes, the sand burns but it doesn't bother me, means here उसको कोई जलन नहीं होती. Like if we will walk on that hot land or hot sand ना, then we'll be frustrated only, or will be feeling hot. Okay, हमारे पैर जल जाएंगे, our feet will be burned only. But here it is saying like the sand burns but it doesn't bother me. रेत गर्म हो जाती है लेकिन फिर भी मेरे को कोई फर्क पड़ता नहीं है, वो मेरे को कुछ नुकसान करती नहीं है. लायन सेज, आई कांट बिलीव इट, मेरे को
तो बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा, ओके, बिकॉज इट इज लाइक डिफिकल्ट टू बिलीव ओनली दैट द सैंड डजंट बॉदर that sand burns doesn't bother the camel. So that is why lion says, I can't believe it. Camel says, can you walk across a desert? Now camel asking to that lion that I can walk across a desert, okay, but can you walk across a desert, lion? क्या आप डेजर्ट में ऐसे चल सकते हो? Lion blinking, no I cannot, but I can run in the forest, okay, and blinking मतलब वो ऐसे कर रहा है, okay, मतलब no I cannot, he replied negatively only that no I cannot walk across the desert, but yes I can run in the forest. मैं तो forest में भाग सकता हूँ. I am also having the capability, okay, और ability. आप ऐसे बोलो ना, मैं land पे चल सकता हूँ, desert में चल सकता हूँ, तो मैं भी तो forest में दौड़ सकता हूँ, okay. So now camel with disdain, every animal can do that, I alone can run on sand, okay. Now disdain मतलब यहाँ पे थोड़ा इतरा के बोल रहा है camel, हाँ, every animal can do that, I alone can run on sand, okay, because lion said that I can run in the forest. So camel ने बोला हाँ तो उसमें क्या हुआ, every animal can do that, I alone can run on sand, मैं भी तो sand पे दौड़ ही सकता हूँ, I can run on sand at 25 kilometers an hour. Now camel is also disdaining, ठीक है, वो भी थोड़ा इतरा के बोल रहे हैं मैं भी 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ सकता हूँ डेजर्ट में. नाउ लायन wonderingly, how can you do that? Wonderingly means now lion got surprised only because he came to know that camel can run in the sand at 25 kilometers an hour. मतलब एक घंटे में 25 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ सकता है. So lion like became surprised only and he asked again, how can you do that? आप ऐसे कैसे कर सकते हो और कैसे कर लेते हो? Okay, now camel says, look at my feet. Okay, now camel is saying like मेरे feet को देखो, they are thick and padded. Okay, वो बहुत ज़्यादा thick है, मतलब मोटे से है, और padded means also the camel's feet are padded. उसके भी जो feet होते हैं वो padded होते हैं, means some जिसको बोलते हैं ना गद्दी वाले होते हैं, गद्दी जैसा नीचे कुछ होता है. The hot sun doesn't burn them. That is why only because my feet are thick and padded. That is why only the sun, that hot sun cannot burn them. वो उसको burn मतलब जला नहीं सकती. Now lion says, my feet are padded too, because in the previous poem only, that was the first line of the poem, कि जो ये lion होते हैं उसके जो paws होते हैं, उसके जो पंजे होते हैं वो भी padded होते हैं, ठीक है. Thorns don't prick them and I can run 80 kilometers an hour. Okay, so now lion is also like boosting itself, ठीक है, कि मेरे पंजे भी पैडेड है. ओके, थ्रॉन्स का मतलब होता है कांटे. थ्रॉन्स डोंट प्रिक देम, कांटे की जो चुभन होती है, प्रिक मतलब यहाँ पे चुभना. ओके, तो डोंट प्रिक देम, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है. एंड आई कैन रन एट 80 किलोमीटर्स एन आवर, और मैं तो आपसे भी ज़्यादा 80 किलोमीटर्स एन आवर तक दौड़ सकता हूँ. नाउ कैमल सेज, दैट इज ट्रू, यू कैन रन 80 किलोमीटर्स एन आवर इन द फॉरेस्ट, बट can you run even a mile on a hot sand? Because now he saw that, camel saw that, now lion is also boosting itself. So let me ask it again. Okay, उन्होंने बोला that is true that you can run at 80 kilometers per like an hour in the forest. उसमें क्या है? But can you run even a mile on the hot sand? लेकिन ये जो hot sand है, because I am having the capability of running 25 kilometers an hour in that hot sand only, and you are running at 80 kilometers per hour in the forest. So can you maintain the speed in the hot sand also? क्या आप ऐसे गर्म रेत में भी इतनी ही स्पीड से भागोगे? Lion से maybe not, but now lion was about to say something कि हाँ वो तो है that you are running in the desert only, in that hot sand only, but maybe not. Lion was continuing, but camel interrupting means बीच में ही बोल देना. And you can't live without water for a week, can you? So now again the camel is boosting itself कि even can you live without water for a week, एक हफ्ते तक आप क्या पानी के बिना रह सकते हो? Lion says, no I cannot, I need water every day. उन्होंने क्या बोला? that नहीं, I cannot live without water. Okay, I need water every day because lion needs water every day. lion को हर दिन पानी चाहिए. But don't you tell me tell me you can do without water? Means lion again surprisingly said कि don't you tell me that you are saying that you can
live without water for a week. So means don't you tell me that you can also live without water? क्या पानी के बिना भी रह सकते हो? Camel says yes I can. Camel बोले हाँ मैं तो रह सकता हूँ. There are no rivers or lakes in a desert. You know that because desert is a dry place. Okay, only sand is there. So no rivers or lakes will be there in the desert. So but that doesn't bother me. वो से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. That doesn't bother me. I can drink 200 bottles of water at a time. Okay, because I am having the capacity of drinking 200 bottles of water at a time. मैं एक ही दिन में मतलब एक ही टाइम पे 200 पानी की बॉटल खाली कर सकता हूँ, मीन्स पी सकता हूँ. ठीक है, एट अ टाइम मतलब एक ही बार में. This is really you must have a big stomach. Okay, so lion says maybe you are having the big stomach, that is why only you can drink 200 bottles of water at a time only. Okay, so lion getting surprised only. Camel proudly says yes I have a big stomach. मेरा जो पेट है, स्टमक है, बहुत बड़ा है. I can store water for a week. मैं एक वीक मतलब 7 दिन तक पानी स्टोर कर सकता हूँ. I can store water for a week. I can store food for 2 weeks even. पानी की बात तो छोड़ो, I can store the food also for 2 weeks. मतलब 14 दिन 14 days the camel can store the food in his stomach or in its stomach. Okay, lion showing a lot of interest. Now lion is becoming interesting only because these thoughts or these facts lion does not know before. Okay, so that is why he is taking some interest and said, do you store food in your stomach? आप ये पानी मतलब ये जो फूड है वो अपने पेट में स्टोर करते हो? कैमल नो आई डोंट, आई स्टोर इट इन माई हम्प. Okay, no, I am, camel is saying no, I am not storing this food in my stomach, but I am storing the food in my hump. Hump means, let me show you. देखो in the picture you can see that 1 minute, let me tell you that. Okay, here that picture has not been given. Okay, so you might have seen that mountain or the hill like structure of camel. पता है camel के ऊपर that camel जहाँ से होता है उसका ऐसा वाला पार्ट जो होता है, सो दैट इज कॉल्ड हम्प. उसको खूंद बोलते हैं, हम्प बोलते हैं. ठीक है, सो येस आई स्टोर इट इन माई हम्प. मैं उसको अपने हम्प में स्टोर करता हूँ. आई ईट अ लॉट ऑफ फूड एट वन टाइम. सो जस्ट एज द वाटर, लाइक वेन एवर कैमल गेट्स द वाटर ही कैन ड्रिंक वाटर एंड ही कैन स्टोर वाटर फॉर 7 days फॉर अ वीक ऑल्सो. एंड वेन द कैमल गेट्स फूड, कैमल डज द सेम थिंग. एट अ टाइम हिल have all the food, मतलब वो सारा खाना खा लेगा. then I don't need to eat for a fortnight. Fortnight means 15 दिन. Okay, after the 15 days will be like over, that is called first fortnight. First day to 15th day, it is called the time period of fortnight. Okay, so here camel is saying then I don't need to eat for a fortnight. मतलब फिर 15 दिन तक मुझे खाने की ज़रूरत नहीं होती है. लायन सेज दैट इज़ इंटरेस्टिंग. लायन बोला ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है, बट व्हाट डू यू ईट? आप खाते क्या हो? कैमल सेज आई ईट लीव्स बट देयर आर नो ट्रीज इन अ डेजर्ट. ओके, कैमल ने बोला दैट आई ईट लीव्स, में जो पत्तियाँ है, जो पत्ते हैं वो खाता हूँ. बट यू नो दैट देर आर नो ट्रीज इन द डेजर्ट बिकॉज डेजर्ट इज अ ड्राई प्लेस. ओके, देर इज ओनली सैंड इन द डेजर्ट, नो ट्रीज, नो लीव्स, और वी कैन से दैट नो वाटर, लेक्स, कुछ नहीं होता है डेजर्ट में. तो लायन सेज व्हाट डू यू ईट देयर? आप वहाँ पे क्या खाते हो? कैमल सेज देर आर थॉर्नी बुशेस इन द डेजर्ट, आई ईट द थॉर्न्स. मतलब देर आर थॉर्नी बुशेस, यू हैव सीन दैट थॉर्न्स, जो कांटे वाली, जैसे ये कैक्टस है. कैक्टस इज अ काइंड ऑफ अ ट्री और प्लांटेशन विच ग्रोज इन डेजर्ट. ओके, सो येस इट इज हैविंग थॉर्न्स, उसके ऊपर थॉर्न्स होते हैं. थॉर्न्स मतलब कांटे होते हैं. सो येस देर आर सम थॉर्नी बुशेस इन द डेजर्ट. डेजर्ट में ऐसी थॉर्नी झाड़ियाँ होती है. आई ईट द थॉर्न्स, मतलब वो जो कांटे हैं वही मैं खाता हूँ. द थॉर्न्स डोंट प्रिक माई थिक tongue, because here one more surprise thing is that camel is having the thick tongue. उसकी जो जीभ होती है बहुत thick होती है, मोटी होती है. so that is why only he can eat thorns. इसी वजह से वो thorns खा सकता है. उसकी जो ये that thorns cannot prick its tongue. उसको चुभ नहीं सकते वो कांटे, because it is having, that camel is having the thick tongue.
Lion says, how funny. ये तो कितना funny है that you are eating thorns only. किसी को सुना है कभी कि जो कांटे खाता हो? Okay, camel says, Mr. King of the forest, please come with me to the desert. Okay, so now camel is offering that to that lion only, that can you please come with me to the desert? आप मेरे साथ चलो desert में रहने के लिए. Lion says, no, I would better not. नहीं बाबा, मुझे नहीं आना आपके साथ. I can't walk on burning sand. I cannot store food and water and cannot eat thorns. Okay, goodbye, good luck. Okay, so lastly lion is refusing to come with to come with that camel only, and he is saying like, I cannot walk on burning sand. मैं इतनी जलती हुई रेत पे चल नहीं सकता. I cannot store food and water and even I cannot have thorns. ठीक है, मैं कांटे खा नहीं सकता, मैं पानी और फूड को स्टोर नहीं कर सकता. गुड बाय एंड गुड लक मिस्टर शिप ऑफ द डेजर्ट. सो लास्टली lion is also calling camel as a sheep of the desert because he got to realize like why the people are calling it as sheep of the desert. Okay, because he is having all the capabilities or the adaptations to live into the desert. ठीक है, live in the desert, वो desert में रहने के लिए लायक होता है because he is having the capacities for, or we can say that abilities to live in the desert. So finally lion also calls him the sheep of the desert. Okay, so now this was the story. It was written by S.K. Ram. ठीक है, the S.K. Ram is the we can say that writer of the story, and these are the cactus. मैंने बोला ना that cactus is also there. तो ये cactus का दिया है picture आपको. Some of the new words are there. No doubt I am going to share the hard word sheet for the same thing. Okay, I hope that you have noted the doubts. Okay, now your ma'am is signing off. Beta, bye bye.